Okay, so my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Okay, so let's see. So today we'll focus on three things which is related to, as you know, clearly focusing on soft skills. Okay, basically when you're talking about the soft skills, so we'll start first with the email. Okay, then we'll see on a call how to talk on, you can say, face to face. So we'll focus on these three topics today. Okay, so face to face, or you can say it's verbal. Okay, तो guys, सीखने के लिए या तो फिर आप बोल रहे हैं यार इसमें सीखने जैसा क्या है? Okay, what's new in that? Okay, email communication, we know how to do that. कॉल पे कैसे बात करना है? Okay, so we know. Then face to face तो हम हर बार बात मतलब डेली की रूटीन में करते हैं. But this is related to your workspace, or you can say office, on floor, in company. ओके गाइस, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्क स्पेस, ऑफिस, ऑन फ्लोर, इन कंपनी, सब एक ही हो गया. मतलब इट इज रिलेटेड टू देयर कंपनी, वेर एवर यू आर वर्किंग, आप वहां पे कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी स्मॉल एग्जांपल बिफोर वी स्टार्ट. ओके, कम्युनिकेशन कोई भी हो, ईमेल हो, कॉल हो, या ऑन कॉल हो, या वर्बली हो, ठीक है गाइस? तो मैं जस्ट एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ. Don't see on the whatever example I'm giving. I just tell you the very small example. Like, see, if there is a one person, his name is Ram. Okay, and there is a one more person whose name is Ajay. Okay, so now Ajay ने communication किया थ्रू द एनी, वी कैन से ईमेल से किया हो, या वर्बली किया हो, या ऑन कॉल किया हो, ठीक है, टू राम. ठीक है, अजय ने राम को एक कम्युनिकेशन किया है. ओके, सो देयर इज अ 2 पार्ट्स. आई एम जस्ट टेलिंग यू. एक तरीका है कि उसने जस्ट उसको बताया कि आपके पिताजी हमारे घर पे आए थे, योर फादर कम टुडे एट आवर होम. ओके, and we enjoyed a lot. We talked on various we can say topics. Okay, so उसने just simply बताया कि हाँ आपके पिताजी हमारे घर पे आए थे. Okay, so this is a respectful language, right? अगर वो सामने नहीं है बट जब उसने ये ईमेल किया, ठीक है, तो उसमें एक रिस्पेक्ट दिखा, राइट? सो इट शोज रिस्पेक्ट. नाउ अनदर एग्जांपल, मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ. ओके, I'm just using a bad word, not bad word actually, but kind of. Okay, कि अगर उसने ऐसा कहा होता कि तेरा बाप हमारे घर पे आया है, so you understand, it is a rough language. Basically, it is a rough language. दोनों का दो भी, we can say the sense या जो भी उनको बताना है वो सेम है. It is the same, right? कि हाँ उनके डैड घर पे आए थे, ये समझा, but the way of talking is different. Is it right? Yes, everyone. I hope so. You are there, and I'm able Yes, to. sir. Correct. Okay. So दोनों का मीनिंग तो एक ही है, राइट? अगर आप सेंस देखोगे तो एक ही है कि हाँ उनके डैड घर पे आए थे, बट द वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. उससे हमें पता चलता है कि जो बंदा या whoever person is talking or who is person is writing a mail or anyone who dropped us a SMS, how the personality or how the behavior of that person. Correct? Is it clear? Yes, guys.
सो जब आप Yes, sir. ऐसा SMS या जो भी आता है तो आप उससे उसको एक आपको पता चलेगा राइट कि वो बंदा का बिहेवियर कैसा है या वो किस सोच का बंदा है. ओके, हाउ इज द हाउ इज द इज टॉकिंग, द वे ऑफ टॉकिंग, ओके, और द वे ऑफ बिहेवियरिंग. सो ये सब आपको उससे पता चलता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ऑन अ फ्लोर और यू कैन सी इन अ कंपनी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका जो इम्प्रेशन है उसके बेसिस पे ही आपका आगे का जो भी करियर है दैट इज डिपेंड्स. Okay, so that is very important. Offices now, as I already told you, I have 11 years of experience in IT. Okay, so I've seen lots of different kind of people. Okay, like ऐसे बंदे हैं जिनको बहुत टेक की है. टेकी इट मीन्स उनको टेक्नोलॉजी को नॉलेज बहुत है. ओके, बट नॉलेज ज्यादा है इसके लिए उनको एक ईगो है. ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग एनीवन से काइंड ऑफ एरोगेंट, बहुत रूडली बात करते हैं. सो उससे क्या होता है कि कहीं तो हर्डल्स आते हैं. whenever you are there is a journey in IT industry or whenever everywhere, not exactly in IT company. So कभी भी आपको हर्डल आ सकता है. ओके, तो इट्स बेटर आपको एक बहुत अच्छा और वी कैन से गुड पर्सन रिलेशन आपको सबके साथ रखना है. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस चीज को अगर आपको मेंटेन करना है तो उस चीज के लिए आपको ईमेल कम्युनिकेशन, आपको कॉल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके साथ अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो आप उससे बोल नहीं सकते हो कि ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई कलीग. So there is a difference between the friend and colleague. So anyone can get any guesses like what is the difference between the friend and colleague or teammate? Yes, I want a dual communication guys. ठीक है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ that will not work. Okay, and I'm not telling you anything technical. हम कुछ टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं. ओके, बट जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ गाइस, बी आई एम जस्ट टेलिंग यू वंस अगेन, इस चीज का भी अलग से क्लासेस होता है. इट फीज अराउंड फ्रॉम 3,000 5,000 to 10,000. ठीक है, क्या हाउ टू वे हाउ टू लाइक बिहेव इन योर IT इंडस्ट्री और वेन एनीवेयर. ओके, व्हेन यू आर डूइंग एनी करियर. सो गाइज बी फ्रैंक, आपको जो भी है आपको फ्रीली बोलना है. ठीक है, so I'm just asking a very small question. What is the difference between the friend and colleague? So any guesses? Yes, Vaishali? Hello, sir. Yeah, Vaishali. Colleague is a professional relationship between with them, and friend, it's casual. Correct. Correct, Vaishali. Thank you, sir. Yeah. Anyone else would like to add something? Sir, Ravindra here. Yeah, Ravindra. Hi. Hi, sir. Friends, like we can share anything with them, and colleagues, like we share like work related Exactly. or office related things. Exactly, Ravindra. So that I'm trying to get answer from you guys. Okay, so that is very important. आपको उसके साथ पर्सनल रिलेशन या इमोशनल ये सब चीजें वहां पे नहीं चलती है. ओके, so whenever you are in office environment, okay, make sure you are talking with your colleague and it should be related to your work. Okay, ऐसा नहीं है कि मतलब बाकी भी चीजें हम डिस्कस करते हैं, बट अगर ऑफिसेस में 10 लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, सो दिस 10 पीपल विल बी योर कलीग. ओके, और माइट बी पॉसिबल है उसमें से 2 आपके दोस्त हो सकते हैं, कलीग प्लस फ्रेंड. बट जो भी आपका फ्रेंड रिलेशन होता है वो आउट ऑफ ऑफिस होता है, नॉट इन ऑफिस. एग्जैक्टली राइट. सो वेन एवर आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना है, वेन एवर यू आर इन ऑफिस एनवायरमेंट, try to behave like a colleague with your friends, with your teammates. Okay, so वो आपके फ्रेंड्स नहीं, क्या ओपनली उनके साथ बाकी भी चीजें शेयर कर रहे हो, बाकी बातें कर रहे हो. ओके, सो इट्स नॉट अ गुड थिंग. ओके, सो बिहेव लाइक अ कलीग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेन एवर यू आर ऑन द फ्लोर, वेन एवर यू आर वर्किंग इन IT इंडस्ट्री और वेन एनीवेयर. ओके, सो मेक श्योर वो आपके कलीग है और अकॉर्डिंगली यू आर टॉकिंग विद देम. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि उनके साथ फिर बात कैसे करना है. ठीक है, सो गाइज आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग. जब आप
ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हो, डोंट थिंक वो आपसे बड़ा हो, आपसे सीनियर हो या आपसे जूनियर हो, भले आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो गाइस, बट डोंट 10, 15, 20 साल जो भी हो, ओके, बट डोंट थिंक कि अगर आपको 2 इयर्स का जूनियर है उसके साथ बात कर रहे हो तो आपका बिहेवियर क्या, आप बोलोगे अरे तू तो ऐसा मत बोलो, ओके. सो देर इज सम रिलेशन विच वी नीड टू मेंटेन, ओके. So give him respect and take respect from him. So that is very important. Okay. So whenever you're talking with your colleague, try to give respect and take respect from him, her. Okay, whatever. But that is very important. Don't feel like that कि अरे ये तो junior है तो उसमें क्या होगा. No, guys. Okay. So I'm just telling you my personal thoughts. Or those some people, those are following those kind of things. कि इवन जब ऑफिस गेट में आप एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपकी मुलाकात या तो आपका जो मतलब इंटरेक्शन होता है वो किसके साथ होता है? एनी गेसेस? HR. Reception. Okay, Security. exactly. Yeah, Watchman. Akshay. I'm just asking, looking for this answer. So basically, security. जब भी आप एंट्री करते हो मॉर्निंग में, आपका सबसे बड़ा इंटरेक्शन ऑफिस में होता है, वो होता है आपका सिक्योरिटी के साथ. ओके. सो डोंट थिंक लाइक दैट कि अरे ये तो यार सिक्योरिटी, उससे क्या बात करना है. ओके. या तो अरे ये तो यार रिसेप्शनिस्ट है, इससे क्या बात करनी है. ओके. सो गाइस, आपको सिर्फ मॉर्निंग में अगर आप ऑफिस जाते हो तो आपको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए कोई ज्यादा चार्जेस नहीं लगते, राइट. सो गिव अ स्मॉल स्माइल एंड जस्ट टेल हिम और टेल हर गुड मॉर्निंग. ओके. सो इट विल बी अ वेरी गुड रिलेशन. आपको कहीं ना कहीं तो इस चीज का फायदा होगा. सो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज ये फायदे के लिए हमें करना है. ओके. सो दिस ऑल आर लाइक अ जेंटलमैन, लाइक सो यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन. डोंट थिंक लाइक ये आपसे बड़ा है या छोटा है. Okay. So guys, whenever you are entered in your organization, you will face first interaction with the your we can say the security. Give him respect. It's not a kind of a very you have to giving a hug and all the things. Okay, you just have to tell him good morning and good evening whenever you are left from the office. Okay, and that's not a big deal. इसमें कोई बड़ी ऐसी चीज है जो आपको करने के लिए मैं बोल रहा हूँ. But these all are very important, guys. Okay, even when I am on a floor, okay, I'm making a good relation with the mausi, matlab mausi, we are talking most of the time with most mausi or madam, whatever, who serve us a tea, okay, who just what cleaning this our desk and all things. Okay, make a relation. That's not a bad thing. Okay, just tell them kasha hat, like how's you and all. Okay, or good morning or good evening whenever you are left shift on office. So it's good thing you have to interact with. So now I'm just talking about the we can say the office keeper or we can say security, but now I'm just concentrating on our main part, that is our seniors or we can say our boss or our colleagues. Okay. So whenever you entered in the premises, tell them like good morning or good evening as per the whatever the time. Okay. So that's very important. So it help you to make and start your communication. So आपका जब भी communication चालू होता है तो ये इसी से ही चालू होता है, right? So guys, interaction is very important first of all. Now, so we'll go one by one on a topic. So first, with the soft skill, I would like to talk related to the email. So email communication. Okay. So email communication अगर आप बोलोगे सो वो आपको आना चाहिए. और आप अगर किसी को अगर समझो अक्षय है, अक्षय ने मुझे ईमेल लिखा है. Okay, I don't know who is Akshay lot and I never seen him. Okay, but like on मैं समझो उसका क्लाइंट और अक्षय ने मुझे कुछ मेल लिखा हुआ है तो मुझे वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एग्जैक्टली उसे चाहिए क्या है. व्हाट एग्जैक्टली ही वांट सम डिटेल्स, ही इज आस्किंग मी सम क्वेश्चंस और व्हाट एग्जैक्टली इट इज. ओके. सो ये मेन मोटो होता है जब आप ईमेल ड्रॉप करते हो, राइट. ईमेल इज अ कम्युनिकेशन, राइट. सो आप जब अगर समझो अक्षय ने कुछ मुझे मेल ड्रॉप किया है, ओके, सो उससे मैं मुझे जैसे मैंने अभी जस्ट आपको रिसेंटली 15 मिनट्स पहले बताया कि मुझे उससे पता चलेगा कि ओके अक्षय का बिहेवियर और वी कैन से
उसका पर्सनालिटी कैसा है, मतलब वो सब आपका जो है इट इज अ इंटरेक्शन, आपका जो इम्प्रेशन है वो मुझे ईमेल में ही दिखेगा, राइट? सो exactly what I'm trying to say here, the whenever you are dropping a mail, okay, it should be relevant to your work first of all, right? And it should be, you have to talk related to your work only, right guys? So what are the main factors when we are talking about the email communication? Okay, so guys, I'm just telling you here, I'm just writing and I will provide you a notes or proper notes. Okay, so I'm just writing here, it's a draft kind of thing. Okay, so email. So guys, email जब आप drop करोगे, okay, let me open one side a Gmail, okay, which will help you to understand. Hope so my screen is visible, right? Hello team. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes. thanks for confirmation. Okay, so guys, see, whenever I'm just writing a new mail, okay, so it is asking me for the two CC and BCC. Okay, so any cases, anyone from our team, can you tell me who exactly the two, then CC and BCC? सो टू में हम क्या लिखते हैं, मतलब किसको एड्रेस करते हैं, सीसी में किसे एड्रेस करते हैं और बीसीसी में किसे एड्रेस करते हैं? Sir, in 2 we write whom we have to send the mail. करेक्ट. ओके. And in CC, suppose we have to suppose I'm sending an email to my colleagues regarding some data, and I have Okay. to keep my manager in CC because I want to know that that person is also know what kind of data I'm sharing with my colleagues. Exactly. And if that is an important data, so Okay. and no idea, sir, about BCC. Okay. No worries. It's good clarification, Ravindra. Anyone else have any guesses? Yes, team. No, sir. No. Okay. No. No worries. Okay. So let me explain first related to the two. So who exactly we written? So as I think Ravindra mentioned, okay, it's correct. So two, it means whom exactly we want to send a message, or we can say the mail. Okay, the person, okay, who want to who want to address, or we can say address this specific mail should be in a two. Okay, so we keep those person in a two. Okay, so जिसे हमें भेजना है कि ओके ये आप मतलब वो पर्सन को ये पढ़ना ही है. ओके, दिस मेल शुड बी, we can say, acknowledged by the person, should be in a two first of all. Okay, then who is CC? CC, it means, अगर आपको anyone can guess what is the full form of CC? Carbon copy. Carbon copy. Right. Okay, so carbon copy, it stand for to just give an awareness or just intimate. Okay, और just now रविंद्र mentioned कि अगर आपके सीनियर है, ठीक है, सो उनको जस्ट पता होना चाहिए कि अच्छा ये काइंड ऑफ मेल विच वी आर ड्रॉपिंग टू दिस पर्सन हु इज वी आर एडेड इन अ टू. ओके, दैट इज अ रिसिपिएंट. सो वी आर कॉलिंग रिसिपिएंट. सो जब हम मेल लिखते हैं और मेल में अगर कोई आईडी में अगर लिखता हो xyz@gmail.com, ओके, सो इसे हम बोलते हैं रिसिपिएंट. सो रिसिपिएंट जब हम टू में एड्रेस करते हैं तो that is a main person or key person who is reading this mail. Okay, it's very important. Then CC is carbon copy. We are just giving an awareness those person, okay, who keeps in a CC, कि उसे पता होना चाहिए कि अच्छा मैंने ये मेल लिखा हुआ है करके. Okay, and he's just aware about what exactly we can say activity is going on. Okay, so those recipient will come into the CC, that is a carbon copy. Now what is a BCC?
Okay, so BCC stand for a blind carbon copy. Blind carbon copy, it means what? अगर समझो मुझे लिखना है ये पर्सन को, एक पर्सन है जिसका मेल एड्रेस मुझे XYZ है, यहाँ पे मेरा एक बॉस है BCC. Generally, we are not using this BCC in an organization, but then also I just trying to explain. So BCC exactly is what? कि समझो अगर आपने मतलब लास्ट केस में समझो आपने रिजाइन डाला है, ठीक है, तो आपने आपका जो भी मेन बॉस है उसे 2 में रख दिया है, देन सीसी में आपने उनके ऊपर का जो बॉस या मैनेजर या HR है जिसको सीसी में रख दिया है. अब बीसीसी में आपका खुद का पर्सनल आईडी रख सकते हो, पर्सनल जीमेल आईडी या जो भी है, ठीक है. अगर आप उसे रखते हो, ठीक है, अगर आप ये आईडी को रखते हो यहाँ पे, तो उसको उससे क्या होता है ना, जब ये मेल सेंड होगा, जब ये मेल सेंड होता है, ठीक है, सो टू एंड सीसी ये दोनों ही रिसिपेंट आपको मेल के बॉडी में दिखेंगे, बट बीसीसी जो है उनको ये नहीं पता चलेगा कि इन्होंने सेंड किया है या नहीं. मतलब बीसीसी का जो भी मेल एड्रेस है वो विजिबल नहीं रहेगा. ओके, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग बीसीसी. ठीक है, तो बीसीसी मतलब ये जो मेल आईडी आपने मेंशन किया, इसे मेल तो मिल जाएगा. ओके, मेल मिल जाएगा, बट those who is in a 2 and CC will not able to see the BCC mail ID. So that is called, we are calling the BCC, blind carbon copy. Okay, so is it clear? Any doubt, guys? No, sir. Okay, great. So guys, as we seen recipients, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि 2 में किसे रखना है एंड सीसी में कैसे रखना है. मतलब जो मेल आप ड्रॉप कर रहे हो, जिससे आपको इंटीमेट करना है या जिससे आप कुछ आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको आपको रखना है 2 में. ओके, और जिसे आपको जस्ट बताना है कि काइंड ऑफ मेल आई एम ड्रॉपिंग, सो उसे आपको रखना है सीसी में. सो इसका मतलब ये नहीं कि सीसी में आप बॉस, उसके बॉस, उसके बॉस उनको रखोगे. सो जस्ट 1 स्टेप अहेड आपके ऊपर जो एक वन लेवल पर्सन रहता है उसे आपको जस्ट इंटीमेट करना है. Okay, so it's depend on the requirement. Okay, but basically we have to do like this thing कि आपके जो लीडर है या आपका जो मैनेजर है उसे आपको सीसी में रखना है. Okay, so this is a basic thing which is related to the email. Okay, so now mail आपको कैसे लिखना है? So as I said, it is a very formal mail, right guys? So आपको अगर कुछ requirement है, so don't write a very lengthy emails. आपको ऐसे रामायण महाभारत नहीं लिखना है मेल में. आपको सिंपल शॉर्ट में आपको जो एक्सपेक्टेशन है वो लिखना है. ओके, और जो अदरवाइज आपको जो भी अपडेट देना है वो आप अपडेट आप दे सकते हो, but don't like write we can say 10-15 lines of email. Okay, कि उसमें आप पूरा उनको डिटेल्स बता रहे हो. Don't do like that. Okay, it should be a very simple and short. किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, because we have to work all the things in a day in 8 hours, not more than that. Okay, so यार इतना कोई रामायण महाभारत पढ़ेगा नहीं, अदरवाइज वो आपको कॉल करेगा कि आपने लिखा क्या है वो मुझे एक्सप्लेन करो. So it should not work. Okay, and communication, mail communication important इसके लिए होता है guys, whenever you are working in any organization, तो एक proof रहता है. Okay, you did this kind of activity on this day. Okay, and which is already given an intimation to your lead. Okay, so he knows about those activity. So आपका एक kind of a proof होता है that will help you in a future. Or if you want to refer, you can refer anytime. So that's why we are dropping an email to your colleagues or any client or your business user. Okay, so that's why emails are very important, guys. Okay, so now simple and short, what exactly means that I will tell you.
ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सी सब्जेक्ट जो है आपका वो भी बहुत सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए. सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन स्मॉल एग्जांपल. जैसे कि समझो कुछ डेटा है, वो मुझे चाहिए. आपका एक कलीग है जिसको आपने टू में रखा है, जिससे आपको डेटा चाहिए. आपने आपको बॉस को रख दिया है. ओके, सो फिर सब्जेक्ट में क्या आएगा? ओके, सो सब्जेक्ट में आपका आएगा रिक्वायर प्रोजेक्ट डिटेल्स. और कोई प्रोजेक्ट है या तो उसका नाम आप दे सकते हो, या तो समझो मैं रखता हूँ GTI, रिक्वायर GTI प्रोजेक्ट डिटेल्स. आपको सिंपल ये आपको चाहिए. ओके, सो दैट इज योर वी कैन से मेन हेडर. ओके, सो अब जब राइट करोगे, सो डोंट डू लाइक द कि आपको मतलब अभी बंदा है, उसका आपको समझो नाम रवि है, आपका कलीग है, आप उससे रवि बोल रहे हो, तो डायरेक्टली आप रवि तो नहीं लिखोगे, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, इट्स सिंपल, लाइक यू कैन राइट हाई or you can write dear. Okay, I would prefer you can write hi Ravi. Okay, then give a small space and then you can write here. अभी आपको यही चीज लिखना है, बट इट शुड बी अगेन इट्स वेरी स्मॉल. ऐसा नहीं है कि अच्छा एक GTI प्रोजेक्ट है, आई जस्ट देयर इज वन प्रोजेक्ट GTI एंड आई डोंट हैव those details, please provide me these details. Okay, and also give me some kind of handover of this detail project and all. ये आपको पूरा इसमें रामायण भर यू हैव टू जस्ट मेंशन कि आपको उसका प्रोजेक्ट का डिटेल्स चाहिए. ओके, सो हाउ यू विल राइट दैट? So whenever you're writing mail to anyone, give respect. So now उससे आप कैसे रिस्पेक्ट दे सकते हो? तो आपका जो भी ईमेल होगा उसमें प्लीज आपका एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन क्या है वो यहाँ पे दिखना चाहिए. ओके, सो इट शुड बी राइट लाइक kindly provide me GTI project details. ठीक है, आप या तो फिर प्लीज भी लिख सकते हो. प्रोजेक्ट डिटेल्स, यहाँ पे आपको रिगार्ड्स लिखना है और आपका जो भी नाम रहेगा. तो दिस इज अ सिंपल थिंग. आपको इसको पॉसिबल है तो आप इससे बोल्ड कर दो. ओके, तो काइंडली प्रोवाइड मी GTI प्रोजेक्ट डिटेल्स. ये आपको उसको कुछ अगर आपको चाहिए तो आप उससे मांग सकते हो. ठीक है, या तो फिर आपको कुछ एक्सेस देना है. सो GTI प्रोजेक्ट टूल्स एक्सेस. ठीक है, काइंडली प्रोवाइड मी GTI प्रोजेक्ट. सो इट विल बी अराउंड, बट आपको जस्ट काइंडली या प्रोवाइड प्लीज ये सब लिख के ही आपको उसमें मेल में राइट करना है. ओके, so that is very important when you are writing a mail to any of your colleague, manager or your bosses. Okay, so that is very important. Sometimes क्या होता है ना guys कि आपका कुछ डिस्कशन हो जाता है. समझो आपका एक कलीग है जिसके साथ आपसे बात हुआ. ओके, एंड that thing you want to maintain in your mail. So how will do that? So it should be right, or it should be start with as discussed. So I have to tell like as discussed on call. अगर आपका मोबाइल के ऊपर काम बात होता है तो आप लिखो ऑन कॉल, या आप लिख सकते हो एट डिस्कस. एक समझो कोई मीटिंग है, मीटिंग खत्म हो गई, उसमें कुछ डिसीजन लिया गया है. ओके, देन यू हैव टू राइट लाइक एज डिस्कस इन मीटिंग. ओके, अब वो मीटिंग कब हुआ है? अगर आज हुआ है तो आप इन द मीटिंग लिख सकते हो. ओके, एज डिस्कस इन यस्टरडेज मीटिंग, या जो भी है, या तो किसी मीटिंग का कुछ नाम होगा, जैसे कि स्प्रिंट मीटिंग होता है. ओके, वो हम देखेंगे क्या होता है. देन कैब मीटिंग होता है. सो ऐसे अलग अलग होते हैं मीटिंग्स होते हैं.
उसका नाम होता है, तो आप वो नाम मेंशन कर सकते हो, एट डिस्कस इन मीटिंग काइंडली प्रोवाइड मी द डिटेल्स, ठीक है। सो वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो इट शुड बी अ मेंटेन व्हेन एवर you are draft any mail to your colleagues or in an organization, okay, so which will help you. Then जैसे आपको मैंने बताया 3 या 4 ही चीजें हो सकती है। आपको आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग फॉर अ डेटा और डिटेल्स, ओके, अदरवाइज यू आर गिविंग सम अपडेट, ओके, आपको कुछ चीज का अपडेट देना है आपके टीम्स को या कुछ आपको एक्सपेक्टेशन है। सो दीज आर कॉमन थिंग्स विच कम्स, ओके, बट दैट इज अ इट शुड बी अ वे टू राइट ईमेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड बी अ शॉर्ट एंड सिंपल, ओके। सो नाउ अगर आप मैंने ये रवि को मेल ड्रॉप कर दिया है, ओके, सो आई एम जस्ट मेकिंग सिंपल, काइंडली प्रोवाइड मी द जीटीआई प्रोजेक्ट डिटेल्स, ठीक है। सो गाइज व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, मुझे कब तक उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए? यस, एनीवन? within 15 minutes if it is important. Right. So there is a priority, Ravindra, basically. If it is a very important, so it should be comes in a 15 to max to max half an hour. Okay. If just suppose if not in a urgent, okay, and you are just writing a mail, okay. So it should be, we can say in a professional way, whenever you are writing a mail to anyone, so should be answerable within a 24 hours. विदिन अ 24 आवर्स आपको उसका आंसर आना चाहिए, ओके, दैट इज अ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इन अ आईटी इंडस्ट्री, ओके। सो अगर आपको 24 आवर्स में आंसर नहीं आता है, ओके, अगर उसने कुछ एक्नॉलेज नहीं किया है, 2 चीजें हैं, माइट बी ही विल एक्नॉलेज इट मीन्स व्हाट, मैंने रवि को मेल डाला, ओके, and Ravi told me in a 15 minutes, okay, Sagar will provide you these details, give me some time, or I am out of office, okay, I will reach in a 2 days, or I will be available in a 2 days, okay, otherwise keep these details, I don't have these details, but I will provide you in next 2 days, so you can wait till that period, okay. But if you didn't get any answer or any mail revert on a mail, so what will be the next? So it should be the 24, after 24 hours you have to write a reminder. So what exactly the reminder? Reminder में क्या होता है, जो मेल आपने ड्रॉप किया हुआ है, okay, on that same mail you have to do the reply all करके, you just have to mention one thing, okay, that you can say gentle reminder, okay. This is a word which we are using. Hi Ravi, gentle reminder. The rest of the details will be below, correct? जो तो आपके reply all में रहेगा ही. Okay, so you just have to mention gentle reminder. Okay. Otherwise, second thing which you can mention here, awaiting reply. Okay. So any one of word we can use here, gentle reminder or awaiting reply. समझो इसके बाद भी उसका रिप्लाई नहीं आता है, okay. So in a communication way, if didn't get any response within a 2 days, मतलब अगर आपको already 24 hours pass हो चुके हैं and again you are dropping, so there is a way, आप gentle reminder 1 डाल सकते हो, उसके बाद में 2 डाल सकते हो, ठीक है। So this will happen. बट आप जब 1 और 2 डालते हो तो एस्केलेशन होता है। एस्केलेशन इट मीन्स व्हाट, नाउ एस्केलेशन मैट्रिक्स कम्स इन दिस पिक्चर। सो एस्केलेशन मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि अगर समझो एक बंदा है, उसका कोई लीड है जिसको आपने मेल में रखा हुआ है, इफ देयर इज एनी पर्सन हु हैविंग हिज लीड, राइट, मतलब समझो इज नॉट वर्किंग इन योर टीम, सम अनदर डिपार्टमेंट यू कैन से, ओके। सो whoever the lead those team, you can mention him in a CC and write a mail. So इससे क्या होगा, उस डिपार्टमेंट का जो भी लीड रहेगा वो उससे बात करेगा कि बॉस व्हाट हैपन, व्हाई यू आर नॉट प्रोवाइडिंग दिस डिटेल टू द पर्सन, okay, otherwise he will reply you on a mail. So whenever you are dropping this gentle reminder to or await reply, you can drop him or you can just mark that person in a CC, okay. So that is a
escalation matrix we are following in a IT industry. Okay, and there is a limitation that is 24 hours. So have to wait till 24 hours, then you can drop those kind of a mail. Okay, guys, clear hai? Is there any question you have in comes in your mind? Please let me know. Yes, anyone have any questions? No? No, sir. Okay, thanks Aparna. So guys, as we seen email part, okay, so email communication that is related to your work, okay, which we are already seen. So now we'll focus on a on call. Once again, as I said, we are not talking with your friends, we are talking with the colleagues. Okay, so there is just some kind of a sense which should be in our mind when we are talking on call with your colleagues. Okay, so what is the way, what we can say, what exactly the proper way while you are talking with your colleague? Okay, so let's start. We'll do one communication kind of thing. Okay, so I'm just calling one of my we can say colleague. His name is Ajay. Okay, so I just called him. So before you're calling to your any colleague, okay, your expectation should be clear. What exactly you required? Okay, what related you are talking? Okay, so these are the very basic questions when you start your communication on a call. So how should work? So as I already mentioned, there is a one project GTI. Okay, so whenever I'm calling to Ajay, I will first of all say hi, good morning Ajay, it's related to the GTI project. Okay, and it's related to this task or this detail. Correct. So what it will help to Ajay, he will able to recollect whatever things which comes related to the GTA project. मतलब GTA project के बारे में जो भी चीजें है, he will collect and then he can start. Correct. So आप directly बोलोगे अरे वो details मुझे provide नहीं किया, वो project details and all. But he will ask अरे which project detail, which related which you are talking with me. That is very important, right? So this all should be comes when you are. It should be clear when you are start your communication. Okay, so now listen activity. Whenever you are calling with your colleague, you have to listen properly. Okay, so now with interest. Okay, so you interested when you're talking with your colleague. Okay, and you have to listen very closely. Now, what it means closely? ओके, सो ऐसी कोई कोई चीज लोग होते हैं कि जो अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ, ओके, इफ आई एम टॉकिंग समथिंग एंड दे विल इंटरप्ट डायरेक्टली. Okay, they will break your sentence, they will stop you. Okay, so it is not a good sign whenever you're in a IT industry. Okay, let them speak, let them complete. Okay, then you can talk. So what exactly let them complete and then you can talk. So basically, whenever any person is talking related to any topic, any project detail or whatever things, technical things, okay, let them complete or let him complete whatever he want to say. Don't break it unless and until it's very important. Don't break it. ओके, अगर समझो आपको ब्रेक करना भी पड़ा, अगर कोई पर्सन है जो टेक्निकली आपको कुछ समझा रहा है, इफ यू वांट टू ब्रेक, ओके, so again there is a some respect or there is some sentence which is we need to talk, like sorry for interruption, sorry for interrupt or sorry for interruption. Okay, then stop him and then you can go ahead. Okay, otherwise you can just raise a hand, or you can, if he's in front of your seat, then you can talk. Otherwise you have to just tell him sorry for interrupt, there is some question which comes in my mind. Otherwise you can stop once he done whatever the things he want to share with you. Okay, then you can start probably whatever you want to say. But अभी आप बोलोगे कि इसमें पॉज कब आएगा, मतलब वो कब बोलेगा कि हाँ मेरा हो गया करके.
Okay, so there is again a very good skill when you are talking something. अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ, if you see whenever I'm talking something, I'm switching to the topic. अगर मैं next topic पे जा रहा हूँ तो मैं पूछ रहा हूँ. So guys, is there anything which you want to ask? Is it correct? So it means what? I'm giving you some space. So I'm giving you some space to talk. अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो. Okay, so that space you want to find out whenever some person or some colleague who is talking in meeting or on a call. Okay, so let him complete, listen properly, try to don't interrupt in between whenever he's talking something. Let him complete and then you can proceed. ओके, सो प्रोसीड आप कब करोगे? तो सामने वाला बंदा खुद से ही बोलेगा. ओके, सो इज देयर एनी क्वेश्चन इन दिस? इफ नो देन आई विल प्रोसीड. इफ यस देन यू कैन आस्क मी. ओके, अदरवाइज यू विल जस्ट टेक अ पॉज. अगर वो नहीं रुकता है, अगर वो पॉज नहीं लेता है, वो अगर कंटिन्यू बात कर ही रहा है, ओके, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? आपको कब कब उसे इंटरप्ट करना है? तो इंटरप्ट उस चीज पे करना है कि जब टॉपिक चेंज होता है. Now, in our case, we are talking, we are just talk about the email. We are now talking about the on call. Okay. So whenever I complete the all things which is email and I'm moving towards on call, try to understand guys, when I'm moving towards the next topic or next point that is on call, then you can stop me. Sorry for interrupt. It's related to the email. See what I'm trying to say? It's related to the email means what you are. I'm just trying to say कि आपको मैं किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन कॉल, मैं बात कर रहा हूँ ईमेल. इट्स रिलेटेड टू द ईमेल एंड आई हैव वन क्वेश्चन. ओके, सो सामने वाला बंदा बोलेगा यस यस कि मैं नो व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन व्हिच कम्स इन माइंड. ओके, so these are all the professional things which we want to learn. Okay guys, so as I said, related to the on call, you should listen carefully what exactly he want to say. Once it is complete, then you can just reply. Okay, that is very important. Now next, अगर आप कोई पर्सन है जो बात कर रहा है, okay, so give him some proper reply. अगर आपको ठीक लगे तो बोले साउंड्स गुड. ओके, इट्स लुक्स गुड, साउंड्स गुड, दैट्स फाइन. ओके, अगर आपको नहीं लगे तो आप बोल सकते हो आई एम नॉट एग्री विथ योर स्टेटमेंट. ओके, और व्हाट एवर यू आर टॉकिंग, माइट बी वी कैन प्रोसीड इन दिस वे. इज इट पॉसिबल? कैन वी डू दैट? दैट इज इम्पोर्टेंट. सो अगर आप कोई बंदा बोलते जा रहा है, ओके, बट इज इट करेक्ट, इज इट रॉन्ग, or is it a proper way? That is not defined. मतलब वो नहीं होता है. Okay, he is just talking generally. Now you have to give him support. आपको उस लेवल तक आपको उसको सपोर्ट देना होता है कि okay, is it correct? या हाँ चलेगा, we'll do that. Okay, so that is appreciation is very important. Guys, one more thing I just want to say. अगर आपके टीम में कोई पर्सन ने अच्छे से अगर कुछ काम किया है, okay, appreciate him. Okay, appreciate him. Whatever you want to say, you can just appreciate him with his work, hard work. Okay, तो उससे एक kind of boost मिलता है. So okay, so he will just we can say he's ready for the next activity. Okay, he feels like okay, I did whatever, it's really good. Okay, and it's helped me or my team very very good manner. Okay, so this all things comes whenever your colleague doing something good, please appreciate him. Okay, so don't shy on that point कि अरे यार इसको क्या appreciate करो. Okay, you have to do. Yeah, appreciation is very important. Okay, now guys, one more thing I just want to share with you. Trust आपको build करना है and earn करना है. Now you will see what exactly trust and what I have to build and earn. So guys, on always just think on this point. जो भी आपके कलीग्स है, आपका बॉस है, लीड है, मैनेजर है, एक ट्रस्ट आपको मेंटेन करना है. ओके, डोंट से लाई. अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप छुट्टी ले लो. अगर आप 2 दिन नहीं आ रहे हो तो आप 2 दिन नहीं, बट डोंट टेल हिम ऑन टाइम.
ओके अगर आज मंडे और आपको मंडे का लीव चाहिए, आप मंडे मॉर्निंग को बोल रहे हो, अगर रियली इट इज वेरी वी कैन से emergency situation, in that case that's fine. But if it is not an emergency, you know very well 1 week before that you are not available on Monday, please drop him a mail or a message before 1 week. Okay, don't wait for the day. Okay, तो उस दिन को अगर आप बोलोगे तो that is not a good impression. Okay, and don't do like that कि कुछ बताया नहीं और छुट्टी ले ली. Never do like that kind of things. Okay, at least you have to intimate to your boss, lead or manager, anyone of who is reporting, and if possible you can just tell to your friend colleague as well. Okay, ki today I am not available, if there is any emergency please let me know. Okay, so I am available on call. So it is a good sign that will help to earn trust with your colleagues. Okay, so when you're in on your organization, okay, it's really help you to making or binding a trust between you and your colleagues. Okay, so that is very important. आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए. वॉट एवर द कम्युनिकेशन विच यू आर डूइंग, इट शुड बी अ क्लियर. ओके, एंड उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते. सो वॉट एवर द कॉन्फ्लिक्ट विच इज हैपन्स इन अ इंडस्ट्री, we will avoid with the help of this trust on your workplace. Okay, so try to do a communication with your colleague and make and earn the trust. That is very important. Okay, so that's fine. So basically ये सब चीजें बहुत छोटी लगती है, बट इसके वजह से बहुत सारे स्पार्क होते हैं. As I already seen, as I told you, I am like 11 plus years of experience. So I've seen a lots of time कि उससे कुछ spark हो जाता है, and then there is a something mishappens in your company. Then आपको अच्छा नहीं लगता है उनके साथ काम करने के लिए, वो कलीग के साथ. फिर बाद में ऐसा होता है कि आप छोड़ते हो कि चलो ठीक है कंपनी छोड़ देता हूँ. So it will affect your career. It will affect your career, guys. Okay, so don't do like that. For that you need to do a very proper communication with your colleagues or in a work environment. Okay, whatever you want to talk, make communication very short, simple and direct. Okay, so don't feels like that. Okay, whatever comes in your mind you can just tell them, but it should be related to your work. और जो भी आपका अगर कुछ पर्सनल है अगर कोई कलीग के साथ, सो वो और वर्क शुड नॉट इम्पैक्ट. ये हमेशा ध्यान में रखना. इट शुड नॉट बी इम्पैक्ट ऑन योर वर्क. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ओके, so that is related to your on call. So whenever you are talking should be clear. Okay, then you have to make or build your trust. That is very important. Okay, so this comes on a call. So is there any doubts or anything anyone want to ask me to do a communication related to the email and on call? Any questions? No, sir. Okay, so let's proceed. The next one is a verbal or face-to-face communication. So this happens on a daily routine, guys. Okay, with your colleague or your teammate. So teammate and colleague is two things. Colleague is a person who works in the same company, in a same floor, is a colleague. And teammate, it means there is a team, right? Like development team, testing team. So you're working with your some team, right? So those are your teammates. So teammate, again you have another bonding, and most of the times you're doing a face-to-face communication with them, correct? So what exactly the face-to-face communication and how to do that? Okay, so let me clear one thing related to the we can say the communication, face-to-face communication. Okay, so face-to-face communication, guys, the first thing is very clear. You should always give a very short and sweet smile, okay, when you're talking with your colleagues or a teammate. Okay, and whenever you're talking with any person, should be a eye to eye contact.
Okay, doesn't matter whether he is male or female. Okay, so you should be do whatever the communication and you are doing a eye to eye contact. Avoid to use any mobile, or you're doing something different and you're talking. Don't do like that. Should be a good listener when you're talking with anyone. Okay, don't do like some people are like making a cross hands. Okay, so the posture is also very important when you're talking with your colleague. Okay, so how you stand or how your hand or like arms are fold or that kind of thing. So that body language is examined, so that is very important. So how you're doing this posture is very important. So make sure whenever you're talking with your colleagues, okay, you should have eye to eye contacts with them. Okay, and just keep your devices away. If it is not necessary, just keep them away from your uh, communication way. Okay, and that is very important, guys. Okay, so basically when you are doing like communication with your face to face communication with your like colleagues. Okay, so try to give them a proper we can say content, what exactly you are trying to say. Okay, or whether you are we can say agree or disagree with the statements, but your statement should be a concrete. Okay, so that is very important. So these all things are a little bit common in your verbal or your on call or email communication, but this is all things are very important while you are serving or we can say suffering to the workspace environment whenever you are working offline. Okay, so respect your colleagues, earn the trust. अगर जितना आप ट्रस्ट उनसे अर्न करोगे, जितना आपका बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, उतना ही आपको जो भी आपका करियर होता है उसमें आपको हेल्प होती है. ओके, सो आई जस्ट सीन already a good trust, like an example I just want to give you. Okay, there is a one CTO, chief technical officer. Okay, there's a 2-3 managers, those are in contact with me, and उनके साथ मैंने जो अच्छे ट्रस्ट मेंटेन किए हुए. So near about 3 to 4 companies, in my previous 3 to 4 companies, I never attend interviews, I directly entered in a company. So there is a bonding, there is a trust कि ये बंदा है ना, ये कर लेगा, and I know him very well. Okay, so most of the times ऐसा होता है कि directly they hired, there is just salary negotiation and they hired. Okay, so as you know, both most of the times we say कि दुनिया गोल है. Okay, so like ये IT इंडस्ट्री भी गोल है. जो बंदा आपको आज HP में दिख रहा है वो आपको कल एक्सेंचर में दिखेगा, परसों कॉग्निजेंट में दिखेगा, या तो फिर 4 दिन के बाद आपको वो कैपजेमिनी में दिखेगा. ऐसा हो सकता है. ओके, सो ट्रस्ट and these all things are very important, how you are dealing with your teammates and colleagues. Okay, so do in a proper way, follow the etiquettes whatever we required. Okay, make a proper bonding with them, it definitely help you a lot. ओके, बहुत टाइम ऐसे होता है कि हम चाहते नहीं है कि हम ऐसा बोले, या हम चाहते नहीं है कि एग्जैक्टली ये वे से आप हमें मतलब आपको जो एग्जैक्टली लिखना है आप लिख नहीं पाते हो, और समथिंग डिफरेंट हैपेंस. ओके, एंड इट विल इम्पैक्ट. करेक्ट, सो नीड टू अवॉइड दोस काइंड ऑफ सिचुएशन. आप मेल लिख रहे हो तो आप कॉल पे मत जाओ. मतलब आप कॉल भी मतलब किससे बात भी कर रहे हो और आप मेल भी ड्राफ्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay, you have to concentrate because it is your work. Correct, you're dropping something very important and which will be a kind of a proof. Correct, so these all things are very important when you are working with the workspace, you're working in a company. Okay, so guys, that's it for the today's session related to the communication. So anyone have any doubts or any scenario or you would like to ask me, so please feel free to ask me so I can able to answer on those questions. Yes, team.
So as I said, it's not a very technical. मतलब ऐसे मैंने कुछ. हेलो सर. Yes, Prasad. सर जब हम एक्सपीरियंस शो करेंगे सो जो कंपनी में जो कलीग्स है और जो मैनेजर है सो एक्सपेक्ट फ्रॉम मी इज मोर सो दैट टाइम हाउ टू बिहेव. Sorry, it's related to. सर हम जब एक्सपीरियंस शो करेंगे ना कंपनी में जब ज्वाइन करेंगे तो दैट टाइम मीन्स वी शो 2 years एक्सपीरियंस और 3 years एक्सपीरियंस. Okay. So that time sir means colleague or manager expected from more na, so means how to behave. Yeah. And Right, Prasad. Okay. So that's why we conduct this session, right? So these might be a very small things which I shared with you, but this will impact a lot. Okay. yes So sir. this will impact a lot. So what I will do, I will just give a proper notes as well that you can refer whenever you have crossed to. Okay. But I'm just giving you this kind of scenarios might becomes okay, and you should aware. Now, the question what you asked me, right? If you shown 2 years experience, then how to behave and don't feel मतलब इसके लिए आप ये मत सोचो, don't be afraid, okay? कि यार मैं behave कैसे करूँ and all. Okay, whatever the naturally what we are doing, do the same. Just add or top of that whatever I told just now in this lecture. Okay, so that's it. Nothing, anything like we can say very rocket science things which you have to do. Okay. एंड डोंट फील लाइक कि यार 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ये कैसे बिहेव कर रहा है. दिस विल नॉट हैपन. ओके, देयर इज अ माइट बी पॉसिबल ना कि आप कोई छोटी कंपनी से आए, छोटे मतलब ऑफिस से आए जहाँ पे इतना सब फॉलो नहीं होता है. माइट बी पॉसिबल. ओके, बट यू शुड बी अवेयर कि एनवायरनमेंट कैसा है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है हर एक चीज पे. ओके, don't take anything personally when you are talking when you are doing work in your organization. ठीक है, मुझे चांस नहीं दिया तो मैं उसके साथ ये ऐसे करूंगा वैसे करूंगा. Don't do like that. Okay, just leave that and you just have to concentrate on the what your work you have and whatever you are new learning in this environment. आपको जब भी कहीं पे भी जाते हो आपको नया क्या सीखने को मिल रहा है, that is very important. Okay, so try to learn new things whenever you're joining somewhere. Okay, and adopt new things. That's it. Okay. thank you sir. Yeah, thanks Prasad. So anyone else have any questions? Hello. Yes, sir. Yeah, hi Ravindra. Hi sir, I have doubt about resume building. Yeah, that we will already I said na. So there is some slots which we are So one by one it will be clear na. Yes. Okay sir, then So fine. now Thank I you. just seen I have just received 8 CVs, 8 resume, or we can say 8 details. Okay, we already shared one link, right? Google form. Yeah. So yeah, so there is a total 30 student. Okay, and I just received only 8 people data. Okay, so let's see. I will go one by one, and then we can connect. Okay, 1-to-1 session. Okay sir, thank you. Yeah, thanks Ravindra. Yeah, Akshay. हेलो सर. जो एक्सपीरियंस है कौन सी कंपनी का ऐड करना, Okay, कंपनी डालनी so है? it's not related to the skills. Okay, so it's related to the CV you're asking me, Akshay, first of all. Yes, sir. And as you said, the experience, so already we are shared 4 company, right? Yes. Okay, so you can refer any one of them. Okay, no issues. Okay, कि मतलब इसका दिखाओगे तो ये ऐसा होगा, उससे ऐसा कुछ भी नहीं है. You can refer anyone. Sir, on which basis we have to add that experience? Means 1 year, 2 years, 3 year, 4 year. How many years of experience I can? Yeah, that's why we have collected all information through Google Forms. Okay, let's be validate and we will come back. Okay. Sir, suppose I can add 2 years of experience. Yeah, Akshay, that's why I said
we made one Google form. Have you done? Have you filled all details in a Google Yes, form? yes, I have filled today. Yes, sir. Hello. Yes, sir, I have filled today itself. Okay. Okay. So we'll connect 1-to-1. Okay. On this slot basis that Sonali will update, and we will connect and we will sort out. Okay. Okay, sir. Anything else? Anyone want to ask something? Okay. Okay, that's it, guys. Okay. So thanks for joining, and you will get an update from Sonali. Okay. Thank you. Yes, Ravindra. Hello. Thank you, sir. Today's session is very important for my current job role as well. So thank you for that. Okay. Yeah. Thanks. Most welcome to all of you guys. Thank you. Thanks once again. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.